Hello everyone, this is Harbans, your very own steel reporter. Welcome to our fifth episode of our show Expert Talks. Today we have with us Mr. Pankaj Jain as an industry expert. With over 30 years of experience, he started his career with the Steel Authority of India Limited and then headed marketing department at Musco and then headed the steel business at the Kalyani Group. And finally, he started his own business under the name Blue Ocean Steels, which has various branches all over India. Right now, he is doing a PhD in the global competitiveness of the Indian steel industry. Now, this is very rare that someone does doctorate on steel industry. And fortunately, we have such a rare person with us today. So, welcome, Mr. Jain. Thank you. Basically, sir, our industry has been doing perfectly well. I should say that it is doing tremendously well since last 5-6 years. So, how do you see? Are you satisfied with the progress so far? Honestly, yes, they are doing quite well, and especially during the last 1 year or so, especially when the prices have gone up, they look to be doing quite well. Yeah. But I feel there are two major challenges which are there in the Indian steel industry. Okay. The first challenge is that whatever strategies we are making, whatever plans that we make at a company level, I see that unfortunately when it comes to innovation or when it comes to really making some new products, we are lagging behind too much, irrespective of the product category. We are lagging behind. That's the first thing. The second thing is that sorry to interrupt you. Why should we? Why should the industry bother when they are minting money like anything? They have been doing so well since last 5-6 years, as I said. So who's actually bothered about the innovation? No. It's not like that. And honestly, it's not 5-6 years. They are not making money. I've been in the business for 30 years. Yeah. They are making more money for the last maybe two years or so. Only last 2 years. But if you really put the kind of margins at which they have been operating, I feel they are not doing so well. And if they have to keep doing well, they have to definitely innovate and also spend on R&D. I will give you just one number. Okay. I'll talk about just the number of patents that have been filed. India and China are of similar size in terms of population. Okay. Yeah. China in the year 2019, they filed for approximately 14 lakh patents, whereas India filed just for 50,000. So much of difference. These are the numbers published by the by the government authorities. I see. Yeah. Well, but if we see the last 10 years, I think production-wise, India was nowhere, right? Now it is the second largest steel producer in the world. So, do you really think that matters? Honestly, see, because production-wise, we are going great guns. No. But I'll correct you. Okay. We are definitely second, but the first one is 10 times of your size. Yeah, that's right. So there is no comparison. Yeah. The population is same. That guy is making 10 times of what you make. So you cannot call yourself second. There's nobody in the race. Okay. Yeah. So with the same population, even if you see the current per capita consumption of steel, it's way below even a lot of African countries. So I think there's nothing to pat about that. We are doing great. In fact, my second point was that India should be investing, on capex for new steel plants. That's the need of the hour. The first one is that yes, definitely the current steel mills got to invest on R&D, got to be creating a culture of innovation and executing it. Yeah. And the second thing is that capex is required in the steel industry. Otherwise, we'll be starving for steel in the times to come. I see. Yeah. That's something new for me. Yeah, very true. So basically, you are doing research in this field. So our audience should also gain from your experience and as well as your learnings, right? This is quite surprising that despite of so much of production, we are still lagging far behind. I will request you to map the production levels for the last 10 years in India.
Okay. See, whenever we do research, we should talk about a longer period. How many new steel plants have you come? You are also in the steel business. I mean, how many new steel plants have come? Hands have changed. You know, one steel going to the other steel plant. But really speaking, how many for a country of India's size? I think no greenfield project has Almost come. no greenfield. Even, I mean, few were announced and all, but they did not see light of the day. I mean, it's time that the Indian steel mills start investing for new projects. And definitely as a country, we have to go from 100 to 300 million ton. And then China is way above. To be very honest, आप ठीक कह रहे हैं कि जैसे मतलब रेट अगर कम हो जाते हैं तो वो 2-4 स्टील प्लांट अपना प्रोडक्शन बंद कर देते हैं और रेट अगर बढ़ जाते हैं तो वही अपना प्रोडक्शन रिज्यूम हो जाता है. You are very right. No new plant has come. No new plant has come. और आपकी कंट्री में डिमांड बढ़ रही है. पहले हम लोग आप देखो कमोडिटी आई मीन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वगैरह में जो भी ज़्यादा कंजम्पशन होता था, आज आप देखोगे तो सेक्टर्स लाइक ऑयल एंड गैस, सेक्टर्स लाइक डिफेंस, सेक्टर्स लाइक न्यूक्लियर, आई मीन एवरी अदर नॉन ऑटो सेक्टर इज गोइंग टू रिक्वायर स्टील इन द कंट्री. हमें नई स्टील चाहिए अपने कंट्री में और क्वांटिटी भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए. आई थिंक दैट्स द नीड ऑफ द आवर. तो अभी जैसे अभी सारा फोकस जो है दैट फोकस शिफ्टिंग ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन द टाइम्स टू कम. सो what that industry will use, it will use something, I mean they require some new kind of steel और जो हमारे पास है already उसी से काम चल सकता है. Actually I'm not aware that. Yes and no both, but the consumption of steel especially in the auto sector will go down. Okay. But electric car की जो इंडस्ट्री में उसमें definitely नई टाइप की स्टील्स भी यूज होंगी. सम थिंग्स आर हैपनिंग बट आई एम वरीड अबाउट द पेस. बट आई विल गिव यू अ बेटर एग्जांपल. लेट्स टॉक अबाउट वी विल सी मोर ऑफ मेट्रोज, मोर ऑफ बुलेट ट्रेन्स कमिंग इन द कंट्री इन द टाइम्स टू कम. आप इतने स्टील मिल्स वालों से मिलते हो, you just ask this question, how many steel mills are making steel which is going to get into the bullet train project, the one which is starting from Mumbai to Ahmedabad? कितने लोग कर रहे हैं? I tell you, very few people are there. The point which I am trying to tell you is that sectors like bullet train is one, defense. हम डिफेंस के बारे में इतनी बातें करते हैं. कितने स्टील मिल्स हैं जो डिफेंस के लिए रियली स्टील बना रहे हैं? ऑयल एंड गैस, टूल्स, काफ़ी सारी जो महंगी जितनी स्टील्स हैं अभी भी इंपोर्ट हो रहा है हमारे कंट्री में. इट्स टाइम दैट द इंडियन स्टील मिल्स रिप्लेस व्हाट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड. द करंट वॉल्यूम्स आर लो, बट इन द टाइम्स टू कम the volumes will increase, and India is also developing as a manufacturing hub for exporting. हम बातें करते रहते हैं कि चाइना को रिप्लेस करना है, चाइनीज पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया, बट वो कैसे होगा? जब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बेस बनेगा तब होगा ना, अदरवाइज वो हो ही नहीं सकता है. लेकिन सर क्या मैन्युफैक्चरिंग बेस अभी हम बन नहीं पाए हैं? क्योंकि जितना भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आई मीन since last couple of years they are entirely dependent on exports. They have huge export volumes, although there is no local demand, but still they are doing well only because of exports. So aren't we a hub already? पेस इज स्लो और ऑनेस्टली जो पूरी पोटेंशियल है वो यूटिलाइज नहीं है. हमें कंपेयर करना चाहिए कि चाइना कितना एक्सपोर्ट करता है, हम कितना कर रहे हैं. बहुत कम कर रहे हैं. थोड़ी बहुत होती है, हमारा बेस इतना छोटा है कि हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं. बट ऑनेस्टली इफ यू कंपेयर आवरसेल्व्स विद चाइना, वी आर ऑलमोस्ट, आई मीन nowhere, almost nowhere. हो सकता है अगेन हम सेकंड हो कोई चीज़ में, लेकिन वो गैप बहुत बड़ा है. गैप बहुत बड़ा है, इससे कुछ मतलब नहीं है. With a similar population, yes, you are right, the gap is too much. Well, sir, you I mean had such a rich experience in the steel industry, and then suddenly after say 28 years, you started your own business. What exactly prompted you to start your own business? हरबंस जी, ऐसा है कि हम सब वी ऑल लिव वंस. हमें ना अपनी जो भी पैशंस है ना वो ऐसी ज़िंदगी पूरी कर लेनी चाहिए. मैं PhD भी क्यों कर रहा हूँ? आई एम कनेक्टेड टू द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन. मैंने अपना बिजनेस, मैं सोचा चलो नौकरी बहुत दिन कर लिया, अगर लेट्स एक्सपेरिमेंट माई सेल्फ इन बिजनेस, एंड गॉड हैज़ बीन काइंड. Today we are. I think that is also a part of your research. Yeah, correct. So that's how it is. One should definitely, I mean, invest in R&D, whether it's a person or the country. Yes, I agree with you. We should experiment. हमें when we are all going to die ना, उस समय हमें इस चीज़ की गिला शिकवा नहीं होनी चाहिए कि यार मौका था और हमने किया नहीं.
वो हमें कर लेना चाहिए। You know, Tesla became such a, I mean, world leader in a very short period of time only because of R&D. Correct. They spent hugely on R&D. बिल्कुल बिल्कुल। They don't have volumes as such, but their R&D is such strong that they have become the world leaders. वाई जस्ट टेस्ला। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आप गूगल करना कि 2020 में वर्ल्ड की टॉप 100 या 50 मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज कौन सी हैं। यू वुड बी सरप्राइज्ड। दुनिया में ना हर 5 या 6 व्यक्ति में से एक इंडियन है, बट उन 50 या 100 कंपनी जिसकी हम बात करें ना, इनोवेटिव मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज, उनमें शायद एक भी इंडियन कंपनी नहीं है। आई फील सैड, नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज द इंडियन इंडस्ट्री, बट वॉट इंडियंस आर इनोवेटिव, और इंडियंस बैठ के वो कंपनीज में कर रहे हैं। दुख की बात ये है, आप टेस्ला बोलो, गूगल बोलो, वो इंडियंस ही बैठ के कर रहे हैं, लेकिन हम इंडिया में इंडियन कंपनीज नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। आई थिंक देयर वी ह्यूज पोटेंशियल इज देयर, करने को बहुत कुछ है, हम सबको मिलकर करना चाहिए। आई थिंक दैट इज द मैसेज विच आई वुड लाइक टू गिव टू द ऑडियंस आल्सो। और सर, हमारी ऑडियंस बार बार ना एक ही सवाल पूछती है, हालांकि पूछना भी चाहिए, दैट अभी जैसे कि war is still not over yet. The Ukraine Russia war, it's still going on. What lies ahead price wise? I'm asking. प्राइस घटेंगे बढ़ेंगे, ये एक जनरल सवाल है जो कि हर कोई मुझसे पूछता है। बड़ी मुश्किल से क्वेश्चन है, अदरवाइज तो मैं अकॉर्डिंगली पोजीशंस ले लेता, बढ़ेगी घटेगी, लेकिन आई फील दैट इन शॉर्ट टर्म थोड़ा हो सकता है ये प्राइसेस 1-2 महीने थोड़ा सा और ऐसे ही, लेकिन इट शुड इवेंचुअली कम डाउन, maybe not to the same levels. On what factors? Again, it is currently mainly driven by the supply chain issues because of the war, okay, and also because of the raw material prices rising. But ये prices मेरी अपनी experience ये बताती है कि शायद ये sustainable नहीं रहेगी बहुत लंबे समय के लिए। Okay. I feel that maybe in the month of May or maximum by June, prices should be correcting. The numbers, it is difficult to tell, बट प्राइसेस शुड कम। हमने ऑलरेडी देखा है कमोडिटी में थोड़ी बहुत करेक्शन, कमोडिटी में तो करेक्शन हुई है, ये तो लैग करती है कमोडिटी के बाद, तो डेफिनेटली ये मतलब वील स्टार्ट सीइंग द करेक्शंस। और ऐसे भी मेरे को लगता है करेंटली अगर हम एकदम इमीडिएट की बात करें तो एज फार एज द डिमांड इज कंसर्न कोई बहुत ऐसा बुलिश डिमांड नहीं है। दैट्स हाउ आई रीड इट, बहुत बुलिश डिमांड नहीं है। यस, थोड़ा प्राइसेस अदरवाइज सस्टेनेबल नहीं होगा, बट दैट्स माय पर्सनल व्यू ऑन द होल थिंग। इट स्टील मिल्स मे नॉट लाइक इट, बट आई फील कि बट उनके RM कॉस्ट भी नीचे जाएंगे, तो डेफिनेटली उनकी मार्जिन शायद उसी लेवल पे रहेगी। सो 2 months डाउन द लाइन यू सी प्राइसेस करेक्टिंग। डिफिकल्ट टू पुट, इट्स लाइक शेयर मार्केट, डिफिकल्ट टू पुट एग्जैक्टली कि आपको बताना मुश्किल रहता है कि एग्जैक्टली कब वो कम होगा या कब बढ़ेगा, बट ये मेरी पर्सनल गट फीलिंग है कि मे बी मैक्सिमम बाई 2 months प्राइसेस शुड कम correct a bit, but that's a very very personal, मेरी 6th सेंस जो बोलती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इतने एक्सपीरियंस्ड आदमी की 6th सेंस भी मतलब किसी बेसिस पर ही बोलेगी, ऐसे तो नहीं बोलेगी। नहीं, मैं जितना पढ़ता हूँ, जितना रिसर्च करता हूँ, उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि प्राइसेस विल करेक्ट, बट यस, लेट मी टेल यू, it will not go back to the same levels at which it was. Yeah, that level is gone forever. That level is gone. That level won't be the same. That levels are definitely new. So हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत करेक्शन, आई एग्री विद यू, होना चाहिए। But that is again very personal view of the whole thing. So thank you, Mr. Jan. Thank you so much. We were able to steal a few moments from your, busy schedule. Thank you so much. So nice you gave us time. Thank you so much. Sir. Thank you. Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe, and share the videos.